an imaginary surface on which each and every point has same electric potential. It is an imaginary surface on which each and every point has the same potential. That is called equipotential surface. So if you have uniform electric field like this, uniform electric field is represented by drawing equidistant parallel lines. So when you have equidistant parallel lines, in that case we have uniform electric field. And the equipotential surfaces would be parallel surfaces like this, which are perpendicular to the direction of electric field. So plane surfaces like this will be equipotential surfaces. So in case we have uniform electric field where you have parallel lines to each other, the equipotential surfaces would be plane surfaces perpendicular to electric field. Like this surface A is equipotential, this surface B is equipotential, this surface C is also equipotential. कहने का मतलब अगर मैं A surface पे किसी भी charge को move करता हूँ from one point to another, there will be no work done. Equipotential surface means that you know formula for work done, as I told you, was like this. If I move a point charge from A to B, this is a moving charge. And the work done was always this VB minus V into Q moving. तो equipotential surface पे work charge को move करने में कोई work done नहीं करना पड़ेगा. अगर मैं charge को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, on this surface, wherever you move the charge, there will be no work done. That's why it is equipotential. ये वाला surface भी equipotential है और ये वाला surface भी equipotential. मतलब whenever electric field is uniform, equipotential surfaces will be parallel to each other. लेकिन अगर हम charge को surface A से surface B पे move करें, if I move the charge say from surface C to surface A, then I have to do work. Okay? अगर मैं charge को surface C से surface B पे move करूँ तो भी work done होगा. Surface B से surface A move करूँ तो भी work done होगा. Because ये पूरा equipotential surface, ये पूरा equipotential surface है, ये पूरा equipotential surface है, लेकिन this and this they have different potentials. This and this they have different potential. Okay, and as such, for uniform electric field, the relation between electric field and potential difference would be E is equal to V by L. The relation between electric field and electric potential would be E is equal to V by L, where V is potential difference. जैसे कि if I happen to choose this surface and this surface, the potential difference हो जाएगा VA minus VC and divided by the distance. Distance has to be in the direction of electric field. Okay? अगर हम किसी भी electric field के perpendicular move करेंगे तो work done नहीं होगा. If you move perpendicular to electric field, there will be no work done. The work will be done only when you are moving not perpendicular to electric field. So this would be the situation. दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज represented by drawing curved lines like this. So if you move from one place to another, if you move on from one point to another, in that situation the relation between electric field and potential would be like this. E is equal to minus dV by dl. In the case of non-uniform electric field, the formula is E is equal to minus dV by dr or dV by dl. Now, why negative sign is there?
नेगेटिव साइन इसलिए होता है बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है. लिख लो. The negative sign is because electric field decreases in the direction of electric field. So the potential decreases in the direction of electric field. The negative sign is because potential decreases the direction of electric field. और अगर बहुत ही जनरलाइज फॉर्मूला मेरे को लिखना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज समथिंग लाइक दिस व्हिच माइट नॉट बी इन योर सिलेबस लेकिन तुम्हें फिर भी पता होना चाहिए. del v by del x I cap, del v by del y j cap, del v by del z k cap. This is when you have electric field which is non-uniform in 3 dimensions. Now इसका मतलब क्या होगा, इसको यूज कैसे करेंगे वो भी सुनिए. नेगेटिव साइन में पता लग चुका है. नेगेटिव साइन इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है. बड़ी सिंपल सी बात है. सपोज यू हैव पॉइंट चार्ज, यहाँ पे 1 मीटर पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इसकी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर मैं 1 मीटर पे पोटेंशियल निकालता हूँ तो के क्यू बाय 1 आएगा. अगर मैं 2 मीटर पे पोटेंशियल निकालता हूँ तो के क्यू बाय 2 आएगा. मतलब जैसे जैसे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन. अब del v by del x का मतलब क्या है? dv by dx में ऑलरेडी मालूम है. dv by dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x. d बट यहाँ पे del v by del x, del v by del x का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन. सपोज हमें पोटेंशियल दे रखा है 3x square y cube z, ये हमें पोटेंशियल दे रखा है. फाइन. मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x y और z पे इस तरह से डिपेंडेंट है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली नॉन यूनिफॉर्म है. तो मुझे del v by del x निकालना है. दैट मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. मतलब y और z कांस्टेंट हो जाएगा और मुझे सिर्फ x को डिफरेंशिएट करना है. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? मतलब 3y क्यूब इंटू z कांस्टेंट हो गया. x स्क्वायर का डेरिवेटिव मान लो 2x. अगर मुझे del v by del y निकालना है तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा. 3x स्क्वायर z कांस्टेंट और y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर हो जाएगा. अगर मुझे del v by del z फाइंड करना है तो x स्क्वायर और y कांस्टेंट हो जाएगा. z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू del z 1 हो जाएगा. और फिर तुम्हें हो सकता है इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट whose coordinates are 1 2 -3. सपोज ये रखा है तुम्हें. तो फिर हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. कैसे यूज होगा ये वाला फॉर्मूला? So I can find del v by del x by substituting 1 2 3 की value. I can find del v by del y by substituting x y z की value and so on. And then you can substitute this. So this is called partial differentiation. When you differentiate with respect to x, y z constant होगा. When you differentiate with respect to y, z और x constant होगा. When you differentiate with respect to z, x और y constant होगा. That is the meaning of partial differentiation. Next, अगर point charge uniform electric field नहीं है, we have a point charge. फिर what will be the shape of equipotential surface? If I have a point charge q positive, then I know that electric field line would be radially outward like this. Electric field lines are radially outward like this. So the electric field lines are radially outward like this. In that situation, जैसे मैंने बताया था, equipotential surfaces are always perpendicular to the direction of electric field because equipotential surface का मतलब होता है कि उस surface पे हम किसी भी charge को अगर move करते हैं, then we don't have to do any work. So it would be concentric spheres. So in the case of a point charge,
equipotential surfaces would be concentric spheres. ये भी आ सकता है अगर point charge होगा then what will be the shape of equipotential surfaces? So for a point charge, equipotential surfaces would be concentric spheres. वैसे भी अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो k क्यू बाई r हर स्फीयर की सरफेस के लिए r सेम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट पोटेंशियल सेम हो जाएगा. Now what if you have a line charge? If we have a line charge, उस situation में what will be the shape of equipotential surface? Line charge इस तरह से होता है. And the field because of line charge would be something like this. So when मैं एक question भी पूछा था टेस्ट में, electric field due to a line charge is 2k lambda by r. क्या था ना डेरिवेशन गॉसेस लॉ में. तो हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन would be radially outward like this. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो equipotential surfaces would be concentric, we can say coaxial cylinders. So in that situation, it would be coaxial cylinders. You can draw this also. वैसे सारा उन नोट्स में मैंने दिया हुआ है. If you remember, the class notes are given to you. All these are there. In the case of line charge, the shape of equipotential surfaces would be coaxial cylinders. Okay. Now suppose you have electric dipole, तो electric equipotential surfaces क्या होंगी? If you have two like charges, what will be equipotential surfaces? वो भी हम draw कर लेते हैं. Suppose you have 2 point charges which are like. अगर 2 point charges like हैं और दोनों का magnitude equal है, तो ensure that you have to show equal number of field lines. Okay? दोनों पॉजिटिव हैं, फील्ड लाइंस इस तरह से बनेंगी, they'll repel each other. The field lines would be radially outward like this. Field lines would be something like this. And if you have unlike charges but equal in magnitude, फिर क्या होगा? That will be electric dipole. That would be like electric dipole. तो अगर electric dipole है तो electric field positive से negative terminate होगा, तो field lines इस तरह से बनेगी. Positive way, say electric field will come out, and from negative it will terminate. So you know this. So this is electric dipole on the right side, and this is two positive charges. So as you can see, field lines यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ पे field stronger है. इस तरह से जहाँ पे field stronger होता है, equipotential close by होता है. It would be closer. जहाँ field कम होता है, weak होता है, वहाँ पे electric potential surface थोड़ा wide show करता है, दूर show करता है, like this. So this would be the shape of equipotential surfaces. यहाँ पे field stronger है, यहाँ पे कम है, because field lines repel हो रही है. So this is how you can draw equipotential surfaces for two like charges. अगर दो negative भी होंगे ना, equipotential surface same बनेगा, सिर्फ यहाँ पे negative sign हो जाएगा, यहाँ पे arrow उल्टा हो जाएगा. अगर question आता है दो negative charge equal and opposite, equal and like charges negative, सिर्फ arrow reverse कर लेना, वो बना लेना नहीं. These are equipotential surfaces.
टेस्ट में एक क्वेश्चन था, फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई थी, एक चार्ज से फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही थी बाहर, एक चार्ज से कम निकल रही थी। क्वेश्चन वाज कि कौन सा चार्ज मैग्नीट्यूड में बढ़ा है। तो अगर चार्ज मैग्नीट्यूड में बढ़ा है तो इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा बाहर आती है। रिमेंबर दिस, व्हेन चार्ज इज मोर इन मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी मोर इन नंबर्स। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है या ज्यादा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस साइड फील्ड लाइंस कम होगी, इस साइड फील्ड लाइन ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज बना देंगे, रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स। यहाँ फील्ड लाइन ज्यादा है कंपेयर टू दिस साइड, तो यहाँ पे will be closer, will be wider। इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो हैं, तो ये दो लाइक चार्जेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की खासियत क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक तो डेफिनेशन हो गई, they have the same potential everywhere. Second is electric potential will be always perpendicular to the direction of electric field. दूसरी बात, you don't have to do any work. If you move a charge from one point to another on equipotential surface, we don't have to do any work. No work will be done. No work is required to be done.